हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी आई प्रोग्रामर में. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी गुड जॉब opportunity that has came in Byju's. As on my channel Byju's has the most number of views, so we'll be talking about the Byju's again. Like I have not uploaded on video on Byju's from last many days, so we'll be talking about the job role that has been announced, that is same as BDA, and we'll be talking about everything like how can we apply, and the process of application is bit different in this. You will be getting a form, you have to fill that form. I will be giving that form, so don't need to worry about that thing. Like if you get this, if you see this video, you are going to understand everything, and I will be using English and Hindi both in this particular video so that it is understandable for everyone. So हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. We are going to talk about eligibility criteria, who all can apply. We are going to talk about everything. No need to worry about that thing. Just go to the screen and we are going to see this everything. Just like if you haven't seen my vlog channel, if you haven't liked this video, see my vlog channel, like this video and subscribe to the channel. You are getting to get these kind of content on this particular channel. So let's start with the video and go to the screen and let's see everything practically. Let's go. So as you can see on my screen is the basic form that we are going to fill, and we will be talking about everything like how to apply. Because अभी वीडियो छोड़ के ऐसे मत करना कि हाँ फॉर्म मिल गया तो वीडियो छोड़ के चले जाएं, because I will be also telling you many things in this video. So just be tuned and watch this video till end if you want to understand everything, if you want to get selected for this particular role. Because my video has been in trend, like it has got many views, and right now also if you search Byju's interview, you will get the very first video that is mine. So no need to worry. I am going to tell you how to crack, what are things to crack, and what are the things you need to prepare. No need to worry about that thing, yaar. I am going to tell you. So the very first thing, the Byju's, the role is same, that is BDA in Byju's. You are going to be selected as BDA in Byju's if you got this role. The second thing is that what is the what we say, the role is written here that in normal form I will say that it is a core sales job, and you have to sell the प्रोडक्ट को सेल करना है आपको, और चीज़ों को आपको समझना है कि मान लो कि एक प्रोडक्ट है तो आपको पर्सनल जो द पेरेंट यू आर टॉकिंग टू, यू हैव टू अंडरस्टैंड हिम, यू हैव टू टेल टू हिम द बेनिफिट्स, ऑल द थिंग्स दैट यू नो, यू हैव टू टेल एवरीथिंग. नो नीड टू वरी. हर चीज़ बतानी, यू नीड टू कन्विंस हिम अबाउट द सेल्स, यू हैव टू कन्विंस हिम अबाउट द product, you have to convince him about everything so that he buys that product and you get your incentive. So that is the basic thing. The next thing is that preferred skill, the eligibility criteria. Preferred skills is that any graduate is eligible. If you are from any graduation, you have done your BCom, you have done your BTech, you have done your BA, you have done your MBA, anyone is eligible for this job. Just you have to be a 12th pass candidate, or you need to have a good experience after 12th so that you can apply for this. Next one is that you have to do the knack for the sales and positioning an idea. You have to do the sales करना है आपको. और next thing क्या है, being interested in mentoring students. You have to be like, if you are interested in mentoring students, it is a good job for you. Like before some days a person was asking me that tell me some mentoring job. It is also a kind of mentoring job, because you have to guide the student, you have to sell that product, you have to guide that particular thing. So it is also a kind of mentoring job. And there is one more role, that is product specialist in Byju's. That is also a mentoring job. Okay, so the next thing is that preferred keen interest in the education. You need to have a good interest in education. Like if you have done your graduation, then you might be knowing about the subject background. Basically they hire बीटेक स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हायर करते हैं. बिकॉज मैं बताऊंगा रीज़न क्या है उसका, कि बीटेक को ना देखो क्या नाम है, टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा होती है, और एज़ कम्पेयर टू एनी अदर बैचलर्स. ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज, मैं कोई अफेंड होने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मल बात बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है. तो उनको ये लगता है कि बीटेक के स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, उसके बाद उनको हायर करने में ज़्यादा फायदा है. सो इफ़ यू आर फ्रॉम बीकॉम ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो वर्क इन दिस कंपनी, यू कैन ऑल्सो गेट सेलेक्टेड इन दिस कंपनी. नो नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग यार. So when you will scroll down, you will find here that it is a direct sales. It is a direct sale, and sales location, it will be across India. You will get across India the sales. What do you say? The sales lead will be given across India. No need to worry about that thing. सारे इंडिया से आपको मिलने वाला है पूरा sales का leads. उसके बाद आप scroll down करोगे, the CTC. When you will see here the CTC is 10 lakh 10 LPA. 10 लाख का आपको CTC मिलेगा, जो कि CTC होता है. CTC क्या होता है? कॉस्ट टू कंपनी. बहुत लोग CTC को समझ ही नहीं पाते हैं और कमेंट में जाके लिखते हैं कि इट इज़ फ्रॉड, इट इज़ ये, इट इज़ वो. ठीक है,
ये चीज़ नहीं करनी है। CTC को समझना है कि CTC कॉस्ट टू कंपनी होता है, कंपनी को 10 लाख आपके ऊपर खर्च करने हैं साल भर में, ये चीज़ होता है CTC। बट आपको इन हैंड क्या मिलेगा वो CTC से बहुत कम होता है, ठीक है। लाइक आपको क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका फिक्स्ड पे है 5 लाख रुपीज़, उसके बाद 3 लाख पर एनम आपका इंसेंटिव होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके हाउ मच यू लाइक डू द सेल्स, हाउ मच यू गेट द सेल्स, बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट द इंसेंटिव्स। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट 2 लाख ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस आपको कब मिलेगा? व्हेन यू विल कंप्लीट योर ट्रेनिंग, 2 months ऑफ ट्रेनिंग विल बी देयर, यू विल कंप्लीट योर ट्रेनिंग, यू विल डू द सेल्स, देन यू विल गेट द ट्रेनिंग अलाउंस। देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट 5 लाख पर एनम, ठीक है। 5 लाख पर एनम में आपको क्या होगा? तो 5 ट्रेनिंग के लाइक ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ 2 months you will get 5 lakh per month. What will be it? It will be like 3 lakh per annum will be your fixed pay and 2 lakhs will be your incentives. These are the things. Then they are hiring for, basically these are the locations they are hiring for right now. That is Jalandhar, Chandigarh, Ludhiana, Jammu and Himachal. You need to be in of these particular locations if you want to get hired. You can also fill this form if you're from any other location. It is like kind of form only, you can fill that form, no need to worry. And if you are from another location, you can directly go to the career section and apply from there. I have already uploaded many videos of Byju's and I have showed also like how to apply. So this was a kind of video that I was scrolling and I got this form, that it was a kind of genuine form, because like many people have got this opportunity from this form also. So the very first thing, how to fill this form, just fill your email ID here, then your name, then your email ID, again email ID and phone number will be required, because on this phone number don't miss like गलत फ़ोन नंबर मत भरना, ऐसा फ़ोन नंबर भरना जिस पे आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, बिकॉज यू विल गेट अ कॉल, ठीक है, कॉल आपको मिलेगी। देन अल्टरनेट फ़ोन नंबर ज़रूर भरना, अल्टरनेट एक नंबर भर देना। और यहाँ पे यू विल गेट हेयर दैट देर आर डिफरेंट डेट्स, अलग अलग डेट्स हैं यहाँ पे कि कब कब आपको अवेलेबल रहोगे कि आप इंटरव्यू दे सको। सो यू कैन फिल एनी ऑफ द डेट्स, कोई भी एक डेट आप चूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक डेट चूज़ करो और आप आराम से इंटरव्यू दे सकते हो, दैट इज़ इट, ठीक है। देन व्हेन यू विल कंप्लीट दिस फॉर्म, I think so, when you will complete this form and like when this thing will be done, like this thing, a submit will be done, then you will get a response on the email ID registered with this form. इस फॉर्म में जो email ID आपने रजिस्टर करवाया है उस पर आप एक मेल मिलेगा कि you have completed this thing. Then अगर नहीं भी आता है, चिंता करने की जरूरत नहीं, उनके पास फॉर्म पहुंच चुका होगा और यहाँ पे लिखा है कि बायजूस से ही क्रिएट किया गया, तो ये जेन्युइन है, ठीक है। सो यही सारा था। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन गो डाउन एंड कमेंट डाउन, लाइक आई हैव गॉट वेरी मच सपोर्ट फ्रॉम यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। सो ये सारी चीज़ें थी दैट आई वाज गोइंग टू शेयर, थैंक यू। So in this video we have talked about everything, like how to apply, what is the process of application, what is the eligibility criteria. I have talked about everything starting from to the end. I have talked about everything. If you want to ask anything, just go down here in the comment section, you can ask anything. You will get the link of this form in the description. No need to worry about that thing, I have already mentioned this in the description. Just go down in the description and find that, and you will get the timestamps also. If you want to see anything like the particular section, you can see from the timestamp. So this was all about the video. Thank you for watching this video. If you haven't seen my vlog channel, you can see my vlog channel. It has बहुत अच्छा vlog channel भी चल रहा है, वहाँ पे बहुत अच्छा information भी share होता है, बहुत मजे भी आते हैं। So you can subscribe that channel also. So this was all about the video. Thank you for watching this video. मिलते हैं next video में ऐसे informative topics के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।